of constitutional crisis in Afghanistan. Afghanistan constitutional crisis कौन in Afghanistan? Crisis in Afghanistan. Explain trajectory. Yes, withdrawal from the Afghanistan led to the collapse of democratic state. It's 2004 constitution होता. Yes, withdrawal नहीं from Afghanistan led to collapse of democratic state. Democratic state collapse हो गया. Establishment of a theoretic emirate under the Taliban. Establishment under Taliban theocratic emirate. धर्म अनुଯାयी theocratic emirate, resulting a profound constitutional crisis देखा marked by the absence of rule of law. Rule of law absence and systematic human rights abuses. मानवाधिकार abuse देखा मानवाधिकार crisis seen in Afghanistan led by Taliban. Trajectory of the constitutional crisis. कौन trajectory तारा constitutional crisis unfolded rapidly. बड़ी चल US withdrawal हो गला August 2021 रे तळे US military forces. Collapse of the republic means head of state elected, but now the Western backed Islamic Republic of Afghanistan and Islamic Republic of Afghanistan and its government structure thila which are democratically elected president president and a constitution thila and provide for a national assembly thila and equal rights thila resolved as the Taliban advance resolve ho gala when Taliban came to the power. All republic government and their equality and their constitution and the constitutional morality other every frameworks has been collapsed and disrupted by the Taliban forces when came into power. Not a people representative of the people, not elected, not a people supportive. Abolition of the constitution. Constitution is abolished. Initially Taliban announced that they would temporarily adopt the 1964 monarchy constitution, excluding Chadi part of in conflict with Sharia. August 22 Taliban supreme leader declared that the Chari constitution completely abolished and forbade use of 96 for constitution, the monarchy constitution, monarchy and Sharia law. Afghanistan is now totalitarian theocratic emirate. Theocratic emirate, Afghanistan. Taliban supreme leader Afghanistan to theocratic emirate. Rule of decree. Totalitarian theocratic emirate where Taliban supreme leader holds absolute power. सब power तांके पाखरे ruling by decree. Strict hardline interpretation of Sharia law. Government structure is autocratic, स्वयंशासित with power concentrated in the hands of supreme leader पाखरे power अछि. And his clerical advisors. तार clerical advisor थे ता पाखरे power all with power concentrated. Absence of rule of law. There is no independent judiciary nahi or legislative body nahi to provide checks and balance on power. Former Afghanistan independent bar association was placed under the control of the Minister of Justice. Former Afghanistan independent bar association place achi under the control of Minister of Justice and judges with modern legal and education were judges with modern adhunik legal education were post. Lack of legitimacy. अगर सब जुडिशियरी बार एसोसिएशन सब मिनिस्ट्री जस्टिस अंडर अच्छी जजेस विथ मॉडर्न लीगल एजुकेशन वेयर नॉट इंडिपेंडेंटली वर्किंग कर पारनांती. लैक ऑफ लेजिटिमेसी आईनगत नहीं अभाव. करंट गवर्निंग फ्रेमवर्क इज नॉट रिजल्ट ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट और पार्टिसिपेटरी प्रोसेस रे नाहंती. Current governing framework, social contract of a participatory process.
डाइवर्स अफगान पॉपुलेशन होची इंक्लूडिंग वुमेन और एथनिक माइनॉरिटीज महिला मीनिंग इट लैक्स ब्रॉड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेजिटिमेसी कौन गवर्निंग and climate change have become one of the central issue in international relation रे आंतर्जातिक संपर्क रे होची इकोलॉजिकल कंसर्न क्लाइमेट चेंज गोटे बिकम्स निश्चिंत गोटे इश्यू कारण ड्यू टू देयर ट्रांसबाउंडरी नेचर ट्रांसबाउंडरी मीन्स वन फ्रॉम ऑल एयर आर इंटरकनेक्टेड तेणु रोल एज क्रिएट मल्टीप्लायर्स थ्रेड बढ़ी जाऊँगी ग्लोबल स्टेबिलिटी स्थिरता नेसेसिटी फॉर ग्लोबल कोऑपरेशन माने वैश्विक सहयोग थ्रू कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी जटिल कूटनीति एंड गवर्नेंस शासन की ड्राइवर्स इंटरनेशनल रिलेशन में कौन मुख्य ड्राइवर्स ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम ट्रांसपोर्ट माने एनवायरमेंटल इश्यू लाइक क्लाइमेट चेंज होची एयर पोल्यूशन वायु प्रदूषण एंड रिसोर्स डिप्लीशन उच्च जो कमी कमी जाऊँगी डोंट रेस्पेक्ट नेशनल बॉर्डर्स एयर पोल्यूशन नेशनल बॉर्डर को बियॉन्ड बाहर डोंट रेस्पेक्ट दौनी नेशनल बॉर्डर्स जो एयर पोल्यूशन ये कौन नेशनल बॉर्डर को रेस्पेक्ट दौची दौनी सम्मान करूनी माने ई डोंट नो जातीय बॉर्डर देशर बॉर्डर को मेकिंग यूनिलैटरल सॉल्यूशन इम्पॉसिबल एंड डिमांडिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन सहज दरकार होची सिक्योरिटी रिस्क माने क्लाइमेट चेंज एक्ट द थ्रेट मल्टीप्लायर थ्रेट बढ़े दूची एक्जासर्बेटिंग एक्जिस्टिंग पॉलिटिकल राजनीति सोशल सामाजिक इकोनॉमिकल टेंशन रोची इट लीड्स टू रिसोर्स स्कार्सिटी उच्च अभाव वाटर एंड फूड खाद्य आउ पानी मास माइग्रेट कर जाउछंती स्थानांतरित एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मास माइग्रेट करछि कोडे माइग्रेट करुच्ची पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी राजनीतिक अस्थिरता रोची से मैंने लो लैंड कंट्री बर्तमान डिमिनिश जो ये इमर्स हो इनसाइड द वाटर भितर इंडोनेशिया म्यांमार जो इंडोनेशिया कौन कैपिटलटा ना ऑलरेडी चेंज हो गला ड्यू टू द इमर्स पानी बुड़ी गला इनसाइड द मेराइन वाटर समुद्र पानी व्हिच कैन रीजनल और इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स द्वंद्व देखा सिक्योरिटी रिस्क क्लाइमेट चेंज जो वाटर फूड मास माइग्रेशन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो म्यांमार से देखा रोहिंग्या क्राइसिस तेणु इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट देखा वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट देखा डिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इकोनॉमिक इम्प्लिकेशन अर्थनैतिक इम्प्लिकेशन होची कौन लो कार्बन इकोनॉमी कम कार्बन इकोनॉमी अच्छी इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट शिफ्ट एनर्जी पॉलिटिक्स करछि ट्रेड डायनामिक्स रिसोर्स कंपटीशन उच्च पई कंपटीशन मिनरल्स यूज इन ग्रीन टेक्नोलॉजी जो मिनरल जो यूज होछि कंट्रीज मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस करछंती विथ एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी सहित तेणु कंट्री कौन करछंती एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी सहित इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस करछंती goals frequent point of concentration contention of international negotiation means the poor countries cannot balance economic development with environmental sustainability because and the developed country already use कर देसंती now low carbon economy तंकर use of they have a good economy say use the non renewable sources which is a conflict between countries equity issues fairness and central to climate diplomacy देखा डेवलपिंग नेशन आर्ग्यू करछंती दैट इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज आर्ग्यू दैट हिस्टोरिकली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बर्ग एमिशन माने डेवलप कंट्री ऑलरेडी रिलीज्ड मेट्रिक टन और बिलियन टन ऑफ कार्बन रेस्पॉन्सिबल फॉर बल्क ऑफ एमिशन जो एमिशन कर छाड़ी रिलीज ऑफ द गैसेस should provide financial and technological support दरकार for adaptation and mitigation to the developing country की financial technological support for adapting जो कार्बन जीरो कार्बन इकोनॉमी और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस से इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ व्हीकल्स एंड एवरी टाइप्स ऑफ
non-poisonous gases. Raises complex question of historical responsibility. जटिल प्रश्न ऐतिहासिक responsibility and national sovereignty. ଜାତୀୟ ସାର୍ବଭୌମ. When external factors affect internal stability. ବାହ୍ୟ କାରକ affect करे तो ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ଥିରତା or even the physical existence भौतिक existence of some island state ର physical existence of island state even island state is going to emerge ବୁଡ଼ିବାକୁ mechanism engagement international law and treaties अंतर्जातीय law the primary framework होची यूनाइटेड नेशन होची framework convention on climate change UNFCCC primary framework होची यूनाइटेड नेशन ऑफ framework United Nations framework convention of climate change which led to key agreements such as the Kyoto Protocol and the landmark Paris Agreement. Paris Agreement in particular brought all the nations together ekati with voluntarily ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ nationally determined contribution ଦେଲେ to limit global warming को चेक करिया ପାଇଁ Paris Agreement रे all the nations together ଆସିଲେ ଇଚ୍ଛା ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ଭାବେ nationally determined contribution. Environmental diplomacy जो परिवेश डिप्लोमेसी कौन सीटा it involves ongoing negotiation like annual conference of parties COP annual conference of parties माने विभिन्न पार्टी भीतर annual conference चलछि the ongoing negotiation like annual conference of parties involvement of scientific bodies involved होउछन्ति such as the IPCC intergovernmental panel on climate change to provide authoritative data and the role of non-state actors जो NGOs corporation सब authoritative data and role non-state actor NGO corporation in shaping policy तैयार करिया and mobilizing public pressure तैयार करिया पे mobilizing और shaping policy तैयार करिया पे NGO corporation government and non-government and non-government authority सब इन्वॉल्वमेंट साइंटिफिक बॉडीज सब एमन सब सेपिंग पॉलिसी तैयार करछंती मोबिलाइजिंग प्रेशर फॉर द एनवायरनमेंट पई हो ग्लोबल गवर्नेंस कौन ग्लोबल गवर्नेंस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड यूएन डेवलपमेंटल प्रोग्राम UNDP एनालाइज रेस्पोंड करछंती क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क क्लाइमेट जलवायु रिलेटेड सिक्योरिटी जो सुरक्षा रिस्क अपन वर्किंग विथ नेशनल गवर्नमेंट काम करछंती नेशनल गवर्नमेंट सहित टू बिल्ड तैयार करिया पई रेजिलियंस एंड इंप्लीमेंट रिस्क रिडक्शन केमसे रिस्क रिडक्शन करा जिवो क्लाइमेट रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क इन कंक्लूजन ecological concerns are no longer peripheral issue nahi but a core determinant of global politics खाली peripheral issue nahi determinant of global politics रे peace शांति security सुरक्षा requiring integrated and collective international action दरकार है to address the complex जटिल interplay of environmental economic अर्थनैतिक and social factors ପାଇଁ कोल्डर एंड पर नॉन आयरन मूवमेंट हैज इरिलेवेंट हो गला अप्रासंगिक द क्लेम ऑफ नॉन आयरन मूवमेंट नाम बिकम इरिलेवेंट आफ्टर कोल्डर वार इज ए कॉमन व्यू मेन पर्पस थिला अपोजिंग बाइपोलर सुपर पावर जो बाइपोलर थिला सुपर पावर वर्ल्ड इज डिवाइडेड बाइपोलर अमेरिका एंड रशिया अलायंस सुपर पावर अलाइनमेंट वैनिश्ड हो गला विद द यूएसआर कोलैप्स हो गला यूनाइटेड स्टेट्स सर्विस रिपब्लिक shifting global focus to economic power global focus to shift करिगला economic power अर्थनैतिक power and creating a unipolar world economic power की world shift कला but many argue कले नाम remains relevant by adapting to new global issue like inequality नाम टा remain relevant प्रासंगिक and by adapting new global issue नुआ global issue कौन कले inequality असमता climate change multipolar power
multipolar power dynamics serving as a voice for the global south ପାଇଁ ଗୋଟେ voice global south ପାଇଁ to promote independent policies independent ସ୍ୱାଧୀନ ପଲିସି କି ପ୍ରମୋଟ କରିବ ଡେମୋକ୍ରାଟାଇଜ ଗଣତନ୍ତ୍ରକରଣ international relation even if its effectiveness is debated ତାର effectiveness debated ଥିଲା ଆଲୋଚନା ଚାଲିଥିଲା argument for irrelevance ମାନେ this side end of bipolarity ମାନେ ହେଉଛି fundamental reason for नाम existence ଥିଲା US सोवियत rivalry end ହେଇଗଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ making it core anti alignments outdated ହେଇଗଲା making anti alignment ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ stance seems outdated ହେଇଗଲା unpolar shift ମାନେ yes merge ହେଇଗଲା ତ soul super power ହେଇଗଲା emerge ହେଇଗଲା leading some to believe alignment with major power ସହିତ ସବୁ alignment ହେଇଗଲା was more practical than lunar alignment ମାନେ more major power ସବୁ are more practical ହେଇଗଲେ non alignment ଠାରୁ ଦେ ସବୁ USA and Russia become super power ହେଲେ emerge power ତେଣୁ ସବୁ all major powers ସବୁ align with USA or Russia there is no need of a practically non alignment movement no major power shifting focus on global politics move from ideological blocks to economical trend first at the time left wings and right wings ideological blocks to economic interdependence ଅର୍ଥନୈତିକ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରତା and regional alliance ଆଞ୍ଚଳିକ alliance ହେଲା diminishing ନାମଟା diminish କରିଗଲା lack of unity ଏକାଠି action ଅଭାବ ହେଇଗଲା ନାମ often struggle କଲେ to find consensus on key issues ମୁଖ୍ୟ issue failed ହେଇଗଲେ prevent regional conflict ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ lacked enforcement mechanism सोवियत अफगान वार समय ଦେଖାଗଲା prevent regional conflicts सोवियत अफगान वार समय नाम अपन struggle कला to find key issues prevent कला regional conflicts failed ହେଲା to regional conflicts ଯୋଗୁଁ prevent କରିପାରିଲେନି lacked enforcement ଅଭାବ ରହିଲା mechanism enforcement କରିପାରିଲେନି सीन ଦେଖାଲା during Soviet Afghan war ସମୟରେ नाम can do nothing not take any action no military enforcement for a continued relevance core principle like sovereignty interdependence anti-colonialism so core principle ରହିଲା arguments ନିର୍ଭରଶୀଳତା sovereignty ସାର୍ବଭୌମତା colonialism anti-colonialism जो उपनिवेशिता विरुद्ध and democratizing global governance विश्वर जो गणतांत्रिकरण remain vital for developing nation ପାଇଁ ରହିଲା the new global challenges now addresses issue like climate change को economic inequality को terrorism को human rights को where developing nation are need a unified voice दरकार थिला unified एक स्वर rise of multipolarity emergence of new powers China India makes a non alignment multi alignment relevant again non alignment multi alignment smaller nations seeks to avoid being caught in new power struggles रे avoid कले बसिया ପାଇଁ in new power struggles रे smaller nations seeks to avoid कले being caught in new power struggle रे बसिया ପାଇଁ enter କରିବା ପାଇଁ voice for the global south नाम प्रोवाइड करथिला प्लेटफॉर्म फॉर डेवलपिंग वर्ल्ड ग्लोबल साउथ रो ग्लोबल दक्षिण रो टू एडवोकेट କରିବା ପାଇଁ फॉर इट इंटरेस्ट ପାଇଁ इन फोरम्स लाइक यूएन रे वेदर दे आर ऑफन अंडर प्रेजेंटेड दिया अनुतल प्रतिनिधि कंक्लूजन while original context the cold war is gone leading some major powers like India to shift strategy change कर नाम has completely disappeared हो गला today depends on how effectively it adapts multipolar world multipolar हो गला champions of the interest of the members rather than being relic bipolarity ठारू multipolarity of a world है